Okay, so let's today start with our topic 20 and CFR. In last videos we are discuss about the 20 and CFR part 211, and today we are discuss about part 210. In this 21 CFR total number of title 50 and 21 CFR today we are discuss. देखो फ्रेंड आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 21 CFR के बारे में, क्या क्या रेगुलेशन रिक्वायरमेंट रहता है, पर्सन्स का रहता है, ट्रेनिंग रहता है, उसको रिक्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में देखेंगे। 210 में CGMP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैकेजिंग एंड होल्डिंग ऑफ ड्रग्स एंड जनरल एरिया के बारे में बताया गया है, और 211 में CGMP ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। 210 स्टेटस ऑफ रेगुलेशन सेट फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट कवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड कंट्रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है, प्रोसेसिंग कैसा रहता है, उसका पैकेजिंग कैसे करना है, ड्रग प्रोडक्ट को होल्डिंग करना है तो कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। फेलर टू कंप्लाई विज रेंडर द ड्रग टू बी अल्टरेटेड, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर कंप्लाई शैल बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एक्शन। अगर किसी पर्सन की वजह से कोई बैच में इम्पेक्ट आया है तो उसके ऊपर रेगुलेटरी कंपनी एक्शन ले सकती है। एप्लीकेबिलिटी अप्लाई टू ड्रग प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज। इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं हम। बैच का डेफिनेशन क्या है? अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ड्रग मटेरियल इंटेंडेड टू हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टर एंड क्वांटिटी प्रोडक्ट्स अंडर सिंगल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर फ्रॉम ड्यूरिंग द सेम साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम कोई भी बैच बनाते हैं उसमें स्पेसिफिक नंबर आता है, उस बैच नंबर आता है, उसमें स्पेसिफिक एपीआई रहता है, इंग्रेडिएंट एक्सिपेंट रहता है, एज पर कैलकुलेशन हम एपीआई बैच में ऐड करते हैं। कंपोनेंट्स एनी इंग्रेडिएंट इंटेंडेड टू यूज इंक्लूडिंग दोज that may not appear in such drug products. Drug product part 210 general drug product finished dosage form fiber any particulate with a length at least 3 times to its with active ingredients any components intended to furnish pharmaceutical activity. Drug is defined by act as any compound that has effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, prevention of disease, or to affect the structure or function of the body of man or animal. ड्रग का डेफिनेशन दिया गया है। ड्रग में क्या रहता है? यानी कंपोनेंट दैट हैज इफेक्ट ऑन डायग्नोसिस, कोई डायग्नोसिस करने के टाइम पे हम ड्रग को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, मैन और एनिमल में। प्रोसेस मटेरियल एनी मटेरियल फैब्रिकेटेड, कंपाउंडेड, ब्लेंडेड और derived for used drug product. Manufacturing, processing, packaging or holding includes packaging and labeling, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। जो बैच बनने के बाद उसका पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद उसको लेबलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, क्यूसी में सैंपल भेजते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल एनी पर्सन और यूनिट डिजाइन बाय द firm to responsible for duties relating to QC। कोई सैंपल हम QC में भेजते तो उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका रिजल्ट के हिसाब से हम अगर बैच ओके रहेगा तो उसको मार्केट में सेंड करते हैं। उसके बाद जब हम पैकिंग करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं, उसके सैंपल राउंड और रेशनल क्राइटेरिया इंटेंडेड टू accurately portray the material
बीइंग सैम्पल्ड। जब बैच पैक करते तब उसका रिटेंशन सैंपल निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी बोलते हैं उसका इनिशियल मिड लेन में निकालते हैं। और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इनकेस अगर कोई मार्केट कंप्लीट आएगा तो हमारे पास उसका रेफरेंस रहता है। उसका एक्सपायरी +1 ईयर हम उसको स्टोर करते हैं। आफ्टर 1 ईयर होने के बाद उसको हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। There are 11 sub-chapter. Identify letters from A through K. Covers all section of operation. Designed to all encompassing. General. Don't accept to a specific. The goal is to what to do, how to do. Provision. Scope definitions. Minimum requirements apply to drugs for human use. Definition. देखो पर्सन के बारे में देखेंगे अब। सब पार्ट बी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंसल्टेंट, पर्सन responsibility of QC. The QC unit shall have adequate laboratory facilities. They shall have the responsibility for approving, rejecting all procedures and or specifications impacting the quality of drug product. Responsibility shall be writing and shall be followed. जो QC के पास जो भी सैंपल जाता है उसका QC को अप्रूव टेस्टिंग करके उसका अगर उसका रिजल्ट लिमिट में है तो उसको अप्रूव कर दे, नहीं तो रिजल्ट उसका लिमिट में नहीं तो उसको रिजेक्ट करते हैं। पर्सन क्वालिफिकेशन, एवरीवन शैल हैव द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस टू देयर जॉब। जो भी पर्सन आता है कंपनी में उसका ट्रेनिंग होता है, उसका एज पर एजुकेशन, उसको एजुकेशन है कि नहीं वो चेक करते हैं, ट्रेनिंग है कि नहीं चेक करते हैं, एज पर एक्सपीरियंस उसको जॉब असाइन करते हैं। Everyone who supervisor those people shall have the education, training and experience to assign function to provide assurance for the drug quality. There shall be adequate number of person responsibilities. Wear clean clothing and protective apparel. Practice good sanitation and health habits. Limited access areas. If you area sick, do you belong in area? जो भी पर्सन नहीं कंपनी प्रेमाइसिस के अंदर आता है तो क्लीन कोट पहन के उसको आना है। उसके बाद अगर को कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है तो उस QC में काम कर रहा है तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव जैसे गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गया, वो उसको पहन के काम करना है। शूज़ हो गया। Consultant shall have sufficient education, training and experience to advise on subject matter. Record maintain stating of the name, address and qualification of consultant. फैसिलिटीज़ के बारे में देखेंगे हम। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स, लाइटनिंग, वेंटिलेशन और एयर फिल्ट्रेशन, एयर हीटिंग एंड कूलिंग, plumbing, sewage and refuse, washing and toilet facility, sanitization, maintenance। बिल्डिंग का जो भी फैसिलिटी रहता है उसका लाइट वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, प्लम्बिंग, वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, मेंटेनेंस के बारे में इसमें बताया गया है। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, एनी बिल्डिंग शैल बी मेंटेन टू फैसिलिटेट क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर ऑपरेशन, एडिक्वेट स्पेस, ऑपरेशन performing defined areas, receive storage holding all operation, penicillin operation in separate area।
लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइडेड, सब जगह पे सफिशिएंट लाइटिंग प्रोवाइड होना चाहिए। वेंटिलेशन, adequate ventilation, adequate equipment for control of environment, micro dust, air pressure, air filtration provided. Plumbing, potable water supply under continuous positive pressure, system free of defects, potable water meeting EPA requirements, drain of adequate size, backflow prevention. Dispose sewage and refuse, dispose of trash, sewage and other refuse in a safe and sanitary manner. Washing and toilet facility, adequate washing facility shall be provided. Hot and cold potable water, soap and detergent, air dryers or signal service towels, single service towels, easy access to working area. Sanitization facility shall be maintained in a clean and sanitary condition, free of rodents, birds, insects. There shall be written procedure on cleaning schedule, method, equipment, material. Shall be written procedure for rodents, insecticides and fungicides. Sanitization facility shall be maintained in a good state of repair. Equipment, equipment design, size and location, equipment construction, equipment cleaning and maintenance, automatic, mechanical and electronic equipment, filters. Equipment design, size and location, equipment shall be appropriate design, adequate size, suitability located to facilitate operation, cleaning and maintenance. इक्विपमेंट जो भी आता है उसका साइज, उसका सुटेबल लोकेशन। अगर समझो कंपनी में कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है तो उसका IQ PQ होता है। इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट बी रिएक्टिव विथ प्रोडक्ट। Lubricants, coolant shall not come into contact with the product to alter the quality of the product. Equipment cleaning and maintenance, equipment and utensils shall be cleaned, maintained and sanitized to prevent malfunction and contamination. Written procedure shall be established for cleaning and maintenance of equipment, utensils. Record shall be kept of maintenance, cleaning, sanitation and inspection. Automatic, mechanical and electronic equipments. Automatic, mechanical and electronic equipments, computer used in manufacturing area shall be routinely calibrated, checked and inspected as per written procedure with written record of calibration inspection. Computer system documentation and validation documentation shall be maintained. Computer system electronic record must be controlled, including record retention, backup and security. Shall not release filters. Shall not release fiber into drug product. If fiber releasing filter are necessary, additional filter using 0.2 micron maximum porosity, 0.45 micron if manufacturing condition so dictate. Use acceptor containing a filter is allowed only after providing FDA safety or effectiveness is not compromised. Control of components and drug product containers and closures. General requirement: receipt and storage of untested components, drug product container and closures. Testing and approve or rejection of components, drug product container and closures. Use of approved components, drug product container and closure. Retesting of approved components, drug product container and closure. Rejected component, drug product container and closure. Drug product container and closure. General requirements: written procedure shall be made and followed. Received sampling, approve, rejection. Handle and store in a manner to prevent contamination. Bagged or box items shall be stored off the floor and be
adequately spaced for cleaning and inspection. Each lot container shall be identified with code and each lot is issued for status quarantine upon rejected. Receipt and storage shall be examined usually for appropriate labeling as to container damage, seal, broken, contamination upon receipt. Material shall be quarantined until tested and released. Testing and approval rejection. Material shall be withheld from use until tested and released for use quality control. From each lot shall be sampled upon appropriate statistical criteria. Sample collection. Clean the container if necessary. Collect the sample in designated area to prevent contamination. Sample shall be identified with lot number, date and done by. Container must show sample were taken. Sample shall be tested for at least one identification test. CFR of manufacturer shall be acceptable provided by at least one specific identification test by establishing vendor evaluation. Any lot that does not meet the specification shall be rejected. Use of approved components. Material shall be used in FIFO. Deviation of FIFO shall be permitted if temporary and appropriate. Retesting. Material shall be retested after storing a long time might be have adverse effect on quality due to exposure air heat. Rejected material shall be stored under designated area to prevent the use of manufacturing. Drug product container enclosure provide protection from external factors that could be contaminated or shall not be reactive, additive and absorptive adhesive effect on product in the suitable for use. Specification and test method shall be written in follows. Written procedure deviation in charge control calculation of yield equipment identification sampling and testing in process material on drug product time limitation of production control of microbial contamination reprocessing. Receipt and storage shall be examined visually for appropriate labeling as to content, container damage, seal broken, contamination upon receipt. Material shall be quarantined until tested and released. मटेरियल का रिसिप्ट होने के बाद उसको विजुअली चेक करना है कोई डैमेज है कि नहीं है, कंटेनर डैमेज है, सील उसका ब्रोकन है, कंटामिनेशन का कोई चांस है कि नहीं है. मटेरियल शैल बी क्वारंटाइन अंटिल टेस्टेड एंड रिलीज. जो भी मटेरियल आता है उसको क्वारंटाइन करके रखना है जब तक उसका टेस्टिंग हो जाता है, उसका जब तक उसका रिलीज हो जाता है, उसके बाद उसको रिलीज का लेबल लगाना है. टेस्टिंग एंड अप्रूवल रिजेक्शन. मटेरियल शैल बी withheld from use until tested and released for use by quality control. मटेरियल का टेस्टिंग, मटेरियल का आने के बाद सैम्पलिंग होता है तब तक उस पर अंडर टेस्टिंग का लेबल लगता है. सैम्पलिंग होने के बाद QC से जब रिलीज हो जाएगा तब उसके बाद अप्रूव का उस पर लेबल लगेगा रिलीज का. फ्रॉम ईच लॉट शैल बी सैम्पल्ड अपॉन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया. हर एक लॉट में से सैम्पलिंग होगा, उसका टेस्टिंग होगा और उस पर अप्रूव का लेबल लगेगा. सैंपल करेक्शन. क्लीन द कंटेनर इफ नेसेसरी. सैंपल करेक्शन के टाइम पे अगर कंटेनर का यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करना है कि नहीं वो चेक करके इफ नेसेसरी रहेगा तो उसको क्लीन करना पड़ेगा. कलेक्ट द सैंपल
is designated area to prevent contamination. Sample shall be identified with lot, date and done by. जो भी पर्सन सैम्पलिंग करता है उस पे लॉट नंबर लिखा होना चाहिए, और जो उसने सैम्पलिंग किया वो डन बाय करके साइन करके डेट लिखेगा. कंटेनर मस्ट बी शो सैम्पल वेर टेकन. सैम्पल शैल बी टेस्टेड एटलीस्ट वन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. जो भी टेस्टिंग के लिए सैंपल लेते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होना ही होना चाहिए. सीओ ऑफ मैन्युफैक्चरर शैल बी एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड बाय एटलीस्ट वन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग वेंडर इवैल्यूएशन. COA of manufacturer shall be acceptable provided by at least one specific identification test. उसमें COA के ऊपर वन स्पेसिफिक मिनिमम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए. एनी लॉट दैट डज नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन शैल बी रिजेक्टेड. अगर उसमें स्पेसिफिकेशन में अगर कुछ आउट ऑफ लिमिट जा रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है. यूज ऑफ अप्रूव्ड कंपोनेंट्स मटेरियल शैल बी यूज्ड issued in FIFO. Deviation of FIFO shall be permitted if temporary and appropriate. जो भी स्टोर में मटेरियल आता है उसको FIFO के हिसाब से ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए. अगर कुछ अर्जेंसी रहता है तो इन केस में डेविएशन लेके उसको FIFO डेविएट का डेविएशन लेके उसको निकालना है मटेरियल बाहर. रीटेस्टिंग मटेरियल शैल बी रीटेस्टेड आफ्टर shorting a long time might be have adverse effect on quality due to exposure to air heat. जो भी मटेरियल तुम्हारा टेस्टिंग होता है उसके बाद उसका टाइम रहता है वो रीटेस्टिंग का 1 साल 2 साल, उसके बाद वापस रीटेस्टिंग होना चाहिए मटेरियल का. अगर समझो तुम्हारा डिग्रेडेशन हो रहा है हीट की वजह से, एयर की वजह से. Rejected material shall be stored under the designated area to prevent the use of manufacturing. जो भी रिजेक्टेड मटेरियल रहेगा तुम वो अलग से सेग्रीगेट करके रखना है उसको. ड्रग प्रोडक्ट कंटेनर एंक्लोजर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट could contaminate or deteriorate drugs. Shall not be reactive, addictive and assertive as to adversely affect product. Clean and suitable for use. Specification and test method shall be written and followed. Control. Written procedure. Deviation. In charge of components. Calculation of yield. अब हम प्रोडक्शन प्रोसेस और कंट्रोल के बारे में देखेंगे. उसमें क्या रहता है रिटर्न प्रोसीजर, डेविएशन, charge in of components, calculation yield, equipment identification, sampling and testing of in-process material drug product, time limitation of on production, control of microbiological contamination, reprocessing. ये सब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर लिखा रहता है. तुम्हारा रिटर्न प्रोसीजर क्या है, तुमको क्या करना है, कहाँ पे डेविएशन आ सकता है. चार्ज इन ऑफ कंपोनेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, तुम्हारा यील्ड का लिमिट रहता है. उसमें इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रहता है, सैम्पलिंग रहता है, इन प्रोसेस मटेरियल एंड ड्रग प्रोडक्ट का टाइम लिमिटेशन रहता है. हर स्टेज वाइज होल टाइम स्टडी किया रहता है, उसके हिसाब से टाइम लिमिटेशन दिया रहता है. अगर समझो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बैच बनने के बाद तुम्हारा 12 घंटा या 24 घंटा जो भी तुम्हारा लिमिट रहेगा उसके हिसाब से अंदर बैच बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए. रिटर्न प्रोसीजर डेविएशन. रिटर्न प्रोसीजर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एंड फॉलोड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल इन प्रोसेस इंटरमीडिएट स्पेसिफिकेशन. प्रोसेस कंट्रोल फंक्शन शैल बी कंट्रोल एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. Any deviation from the established procedure shall be recorded and justified. Each batch formulation should be attempt to make 100% specified active ingredients. Components of manufacturing shall be weighed, measured and subdivided as appropriate and should be verified by second person. QC release approved. Weight measurement is correct as per batch record. Containers are properly identified.
When the component is transferred to non-original container, it shall be indicate name, item code, receiving control number, weight measurement in new container, batch for which component was issued including name, strand and lot number. Each component added to the batch shall be verified by the second person. Calculation of yield. Actual yield and percentages of theoretical yield shall be determined at the conclusion of each stage of manufacturing, processing, packaging, holding of drug product. Such calculations shall be either performed by one person independently verified by second person. Equipment identification. Storage container, processing lines and major equipment used during the production shall be properly identified. Major equipment shall be identified by number or codes that shall be recorded in batch production record to show the specific equipment used. Sampling and testing in process. In process specification shall be consist with the final specification. In process material tested for ID, quality, strength and purity and be accepted or rejected by QC. Rejected material shall be quarantined in order to prevent use manufacturing. When time limitation on production. When appropriate time limits for the completion of each phase of production shall be established to assure the quality of product. Deviation from established time limit may be acceptable in such deviation does not compromise the quality of the drug product. Such deviation shall be justified and documented. Control of microbiological contamination. Written procedure shall be established and followed to prevent objectionable microorganism in drug product of non-sterile. Written procedure shall be established and followed to prevent microbiological contamination into sterile drug product. Such procedure shall be include validation, reprocessing. Written procedure shall be established or reprocessing the batches do not conform the standard or specification. Written procedure shall be established for the step to taken to ensure that the reprocessing batches will conform all established standard, specification and characteristics. Reprocessing shall be performed without the review and approved by the quality unit. Material examination and usage criteria. Labeling issuance, packaging and labeling operation. Temper-resistant packaging requirement for OTC human drug product. Drug product inspection, expiration dating. Material examination and usage criteria. Written procedure shall be established and followed for receipt identification, storage, handling, sampling, testing, labeling and packaging material. Material not meeting specification should be rejected. Record should be maintained with the detailed receipt examination and approved rejected. Label should be stored separately for each product and access will be limited to authorized person. Obsolete and outdated label shall be destroyed. Visual inspection shall be done for correct labeling during or after completion of finished operation shall be performed by one independently verified by second person. Strict control shall be exercised over labeling issue for use. Compare issued material to master. Reconciliation of label should be maintained. All excess labeling bearing lot control number shall be destroyed. Return procedure shall be established and followed for issuance labeling. Return material shall be stored for mix-up. Packaging and labeling operation. Return procedure shall be established for packaging and labeling operation. Procedure shall be covered following preservation of mix-up contamination, identification and handling of set aside filled but unlabeled product, identification of drug product with lot or control, examination of packaging and labeling materials for suitability and correctness before packaging operation, inspection of packaging and labeling facility to ensure the previous product are removed and clean. Drug product inspection. Package and label product should be finally inspected to assure correct labeling. A sampling of unit shall be collected and inspected for correct labeling. Result of inspection shall be recorded in batch record.
Expiration dating. Expiration date should be determined by stability testing. Label shall be reflect and storage condition determined by stability testing. Expiration date shall be bear on label for product to be reconstituted and unreconstituted. Expiration date must be reflect on labeling. Warehouse procedure, distribution procedure. Warehouse procedure. Quarantine of drug product before release by the quality control unit. Storage of drug product under appropriate condition which may not affect quality strength. Distribution procedure. Oldest product are distributed first. Deviation is permitted if it is temporary and appropriate. Distribution record should be maintained to facilitate recall if required necessary. Laboratory control. General requirement. Testing and release for distribution. Stability testing. Special testing requirement. Research sample. Laboratory animal. Penicillin contamination. General requirement. Written procedure shall be established and followed for specification, test procedure, sampling and scientifically sound. Any deviation from established shall be recorded and justified. Instrument calibration should be performed as per procedure and schedule. Instruments which are fail not used. Testing and release for distribution. Every batch should be meet specification prior to release. Sampling and testing then should be described in written procedure. Validated method should be employed for testing. Any batch not meet specification shall be rejected. Stability testing. Stability studies should be performed. Stability sample should be simulated to the market. Written procedure should be available with the following details: sample detail, testing interval, stability condition, stability specification. Representative of each batch sample shall be retained. Sample quantity consists of two complete analysis. Sample should be simulated to the market. Sample should be retained up to 1 year after expiration. Sample should be examined visually once in a year for any deterioration in recorded. Laboratory animal used in testing components shall be maintained and controlled in a manner that assure the suitability for their intended use. They shall identify and adequate record shall be maintained showing the history of their use. Penicillin contamination. Penicillin control in a separate facility. If exposed to penicillin, the product shall be tested for the presence of penicillin. Such drug products shall not be marketed until they comply as per FDA requirement. General requirement. Record and reports. General requirement. Equipment cleaning and uses log. Component, drug product, container closure and labeling record. Master production and control record. Batch production and control record. Production record review. Laboratory control. Distribution control. Complaints file. General requirements. Record shall be retained for at least 1 year after expiration date. All record or copies of such records shall be readily available for review inspection. Product quality review should be performed once in a year. Procedure should be established to ensure that management are notified of investigation record FDA issues. Equipment cleaning and usage log. Equipment usage record should be maintained. Container closure and labeling record. Record should be maintained including supplier name and lot number, date of receipt, approved, rejected. Label shall be compared with master production and control record. Master production and control record shall be maintained, made by one person and checked by another. Prepared, dated, full signature. Complete list of components. Accurate statement of weights. Responsible variation. Theoretical reconciliation. Batch production and control record. Batch production and control record shall be maintained, include operation dates and equipment used, list of material and quantities, in process result, actual and theoretical deviation, done by and checked by sign.
Production record and review. Batch record including packaging and labeling shall be reviewed and approved prior to release. If any batch failed to meet the specification shall be investigated and recorded. The investigation shall be extended to other batches that may have been associated with the specific failure or discrepancy. A written record of investigation shall be made and shall be include conclusion and follow-up. Laboratory record. Lab record include complete data from all tests, description and sample received, statement of each method, complete record for all data, graphs, charts, initial of person doing test and dates, initial person checking and dates, calibration data maintained, stability record, distribution record. Distribution record shall be maintained who, where, what, quantity. Complaint file shall be maintained. Investigation performed include name, product, lot number, name, complaint, nature of complaint, reply, written drug salvaging, written product identified and held. If condition of return and storage are in doubt, investigation is warranted. Procedure shall be writing. Drug salvaging. Product subjected to improper storage condition due to disaster or accident shall not be salvaged unless test can be show everything is okay. Evaluation of condition indication product was not exposed to such harass condition.